राइडर जोन फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है इस स्प्लेंडर की सर्विस के ऊपर। यह है हमारी स्प्लेंडर 2016 मॉडल। आज हम करेंगे इसकी सर्विस और मेंटेनेंस। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी खुद से सर्विस कैसे कर सकते हैं। इसका इंजन ऑयल चेंज, इसके लिए हमें नीचे से इसका स्क्रू खोलना पड़ेगा, बोल्ट। इंजन ऑयल इसका निकल चुका है। अब इसका फिल्टर देखते हैं कि इस फिल्टर की क्या कंडीशन है। उसके बाद फिल्टर इसका क्लीन होगा या फिर चेंज होगा, वो देखते हैं। फिल्टर की कंडीशन इसका फ़िल्टर बॉक्स खुल चुका है। अब निकालते हैं इसका फ़िल्टर। ये देखिए इसके फ़िल्टर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। पूरा जाम हो रखा है, इसके अंदर बहुत मिट्टी है। वैसे अब इसको चेंज करने की कंडीशन में तो नहीं है, इसको क्लीन कर देते हैं। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे इसको साफ़ किया और इसको लगा दिया। चलिए अब इसको पैक कर देते हैं, थोड़ा क्लीन करके इसके बॉक्स को। बस इसका फ़िल्टर भी क्लीन हो चुका है। अब इसका हम ऑयल तो निकाल चुके हैं। अब इसका ऑयल डालेंगे इसमें, नया जो हम ऑयल लेके आए हैं। फ्लशिंग, जिससे कि इसके अंदर जितना भी इंजन ऑयल चिपका हुआ होगा और जितने मेटल्स के पार्ट्स कटे हुए होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। और हम इसका इंजन फ्लश करेंगे प्योर कार्बन ऑयल से। चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाता है, ताकि आप भी कर लें। Fill the engine oil in engine. कि क्या कंडीशन है।
एवरेज नहीं दे रही। और आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो उसका एक बार प्लग चेक कर लीजिए और उसको थोड़ा इसको स्टार्ट करके देखते हैं। चलो सर्विस हो गई डन इसकी।